Good morning, students. I am Hemlata Yadav, and we will be discussing today some questions of Chapter 22, Control and Coordination of Biology, Class 11 Biology. Chemical coordination is through the hormones, as you know, and these are the questions. Dash are the chemicals that are released directly into the bloodstream, which then carries them to organs and cells that may be far off from their point of origin. So in that, this hormones will be released as the chemicals in the bloodstream, and they will be carried to organs or cell that may be far off. Means target organs पे जाकर इनका एक्शन होता है. एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तीन तरह के सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं. So you will pick the answer. Androgen, estrogen, progesterone are the three types of sex hormones. The metabolic rate of most body tissues is directly controlled by, coordinated by the metabolic rate. बहुत सारे body tissues में क्या anabolism, catabolism होगा, तो वो metabolic rate thyroid hormone करता है कंट्रोल. आपको पता होना चाहिए TH. Thyroid hormone is regulating the metabolic rate. Which of the following element is required for synthesis of thyroid hormone? कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस के लिए थायराइड हार्मोन? आपको पता है, ऐड भी आता है टीवी में. आयोडीन. आयोडीन बहुत जरूरी है थायराइड हार्मोन के बनने के लिए, तो आयोडीन इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू हार्मोन रादर एन ट्रॉपिक सब्सटेंस? इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है पर एक ट्रॉपिक सब्सटेंस है, ये आपको बताना है. तो इसमें आंसर क्या होगा? एल्डोस्ट्रॉन इज अ ट्रॉपिक सब्सटेंस बिकॉज आपको पता होना चाहिए इट इज रिलीज फ्रॉम द hypothalamus. So hypothalamus is known to release the tropic hormone, tropic substances. So therefore aldosterone we will go with. Thyroid stimulating hormone TSH, it is also released from the hypothalamus. So CTSH can also be there. Aldosterone should not be there. TSH should be there. Thyroid stimulating hormone, because it will be acting as a tropic hormone. Which of the following is considered as an endocrine organ? Pituitary, pancreas, adrenal, hypothalamus. Considered as an exo and endocrine, both. So mixed gland, which of them is mixed? Means out of these four, we know that pancreas are the mixed. They are heterocrine in nature. And other than pancreas, gonads are also heterocrine. That means a few portion of them is exocrine, which will make enzymes. And other portions are endocrine, which makes hormones. So endocrine portion are the islets of Langerhans. Islets of Langerhans are the cells which produce the insulin hormone, and pancreas is the organ which is heterocrine organ, means exocrine also, endocrine also. The normal endocrine controls can be directly normal endocrine control can be directly overridden by the dash system. कौन सा सिस्टम है जो कि एंडोक्राइन कंट्रोल को ओवरराइड करती है? सो नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो होता है, दोनों कोऑर्डिनेशन के काम करते हैं, पर नर्वस सिस्टम डायरेक्टली ओवरराइड कर सकता है एंडोक्राइन सिस्टम को, क्योंकि न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से सिग्नलिंग करते हैं. दैट इज मोर फास्ट. Drinking alcoholic beverages increases urine output because it causes decreased activity by. तो अल्कोहलिक बेवरेज पीने से ज्यादा यूरिन रिलीज होता है, क्योंकि किस चीज की डिक्रीज हो जाती है? एक्टिविटी, ADH. Endocrinology involves the study of endocrine organs and dash. The endocrinology में क्या क्या आता है? तो endocrine organs आते हैं, and
हॉर्मोन्स आते हैं। एंडोक्राइन ऑर्गन तो पढ़ती है, एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एज वेल एज द हॉर्मोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो उसके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एड्रेनल ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, thyroid gland is the endocrine gland because both release their hormone in the blood. Adenoid gland, pituitary gland. Pituitary gland is also releasing hormone in the blood. So adenoid gland is not the endocrine gland. So answer will be C. Now next 11th, steroids are synthesized from. Steroids किससे synthesize कर होते हैं? So steroids, we know that cholesterol से synthesize. So steroids are synthesized from cholesterol. Any given hormone will influence the activity, its receptor cells, its effector cells, influence the activity, its target cells. So given hormone हमेशा किसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है? टारगेट सेल्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो इट्स टारगेट सेल्स. When one hormone opposes the action of another hormone, the interaction is called antagonistic. मतलब एक हार्मोन दूसरे हार्मोन का इफेक्ट और एक्शन को अपोज कर रहा है तो इसको एंटागोनिज्म कहेंगे. एंटा मीन्स ऑलरेडी अगेंस्ट होता है, तो एंटागोनिज्म इज आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द स्पर्म और एग प्रोडक्शन? गैमेट प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? तो इसमें हमको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आंसर है. ओके, गैमेट प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय follicle stimulating hormone. 14 answer is B. As blood levels of dash rise, the um, expulsive contraction of labor pain, momentum and finally end in birth. तो जब blood level किसके? ऑक्सीटोसिन के राइज होते हैं. ऑक्सीटोसिन क्योंकि एक ऐसा हार्मोन है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, लेबर इंड्यूस करता है. द सेल फाउंड विद इन द पैराथायरॉइड ग्लैंड दैट सीक्रेट पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स आर कॉल्ड. जो सेल पैराथायरॉइड ग्लैंड में होते हैं, जो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स. यहाँ पर आंसर दिया हुआ है पैराफॉलिकुलर सेल्स. एक्रोमेगैली इज ए कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ओवर सिक्रीशन ऑफ. जब एक्रोमेगैली होती है ये ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रीशन से होती है इन अडल्ट. फेस का जॉ का साइज अनप्रोपोर्शनेट तरह से ग्रो कर देता है, फिंगर्स भी अजीब से ग्रो हो जाती हैं बिकॉज अडल्टहुड में पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है. एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट. एड्रेनल ग्लैंड में से कौन से हार्मोन रिलीज करता है एक्सेप्ट? एंड्रोजन रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, तो ऑल्सो रिलीज कॉर्टिसोन, बट इट डज नॉट रिलीज रेनिन. तो रेनिन आपको पता है किडनी के जेजी सेल्स से रिलीज होता है. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन डज नॉट इंक्लूड. केमिकल क्लासिफिकेशन हार्मोन की इनमें से किस बेसिस पे नहीं की गई है? प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, ग्लूकोज कंटेनिंग हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन्स. सो ग्लूकोज कंटेनिंग हार्मोन्स नहीं होंगे कोई भी, बिकॉज आपको पता है नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं हार्मोन्स. हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ. हाइपोथैलेमस किसके सिक्रीशंस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं? pituitary, because you know that master gland is pituitary, and above the pituitary there is another master of master which is called hypothalamus. So answers are also given here, and we have done the questions. एक क्वेश्चन में जिसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसके हम आंसर देख सकते हैं यहाँ पर. और आप इसको स्क्रॉल करके कोई से भी का आंसर भी चेक कर सकते हैं. हमने यहाँ पर आंसर टेबल भी इसमें दिया हुआ है. वैसे तो आपको सभी आंसर्स पता चल गए हैं. अल्कोहलिक
drinks. Eighth question, and which is not a true hormone but rather a tropic substance. Fifth question. So fifth question and eighth question का आंसर हम चेक करते हैं. Fifth question answer is D given, and eighth question answer A is given. Fifth D and eighth A. Fifth question answer is D and eighth A. So drinking alcoholic beverages increases the output of urine because decrease the activity of ADH hormone. That was correct. We also gave it ADH. And fifth A, which is not a hormone but rather a tropic substance. Fifth question answer was D. So TSH. So TSH, you were given answer TSH. Thyroid stimulating hormone is a tropic substance but not a hormone. So I hope you have understood this. Now let us revise another chapter MCQs because we have done this. So now you are able to see this question of control and neural control and coordination. So we will be discussing this now. Certain chemicals which are released at the synaptic junction are called. So what are these substances called? These are called neurotransmitters. Potential differences across resting membrane is negatively charged. This is due to the differential distribution of the following ions, sodium and potassium. सोडियम और पोटेशियम की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिवली चार्ज रहता है न्यूरॉन अंदर की तरफ से इनर साइड. And because of potassium and sodium, but because of another ions as well, which are calcium and chlorine ions. Now, third question, resting membrane potential is maintained by the hormone, neurotransmitter, ion pumps, or none of the above. Answer will be ion pumps. Resting membrane potential ion pumps की वजह से maintain किया जाता है. The junction of our visceral organs is controlled by the function of visceral organs. Organs हमारे जो internal organs हैं, heart, kidney, liver. So इन्हें visceral organ कहते हैं, stomach. और इनके function किससे control होते हैं? They are controlled by the somatic nervous system, sympathetic and parasympathetic nervous system से control. Sympathetic and parasympathetic nervous system. Which of the following is not involved in knee jerk reflex? इनमें से कौन सा knee jerk reflex में effective नहीं है? So muscle spindle, motor neuron, brain, interneurons. तो आपको पता है कि brain involved नहीं होता reflex actions में. So answer will be brain. Muscle spindle will be involved because it is having receptors. Motor neuron will be involved because it will give the command for movement of leg, and interneurons are there in the spinal cord. So answer will be brain. And an area in the brain which is associated with the strong emotions is
कौन सा एरिया ब्रेन में आपका इमोशन से कनेक्टेड होता है? तो इट इज लिम्बिक सिस्टम. सी आंसर विल बी करेक्ट. Limbic system, in which amygdala is there, hippocampus region is there. So the region is located near the midbrain and it is responsible for strong emotions. Mark the vitamin present in rhodopsin. So vitamin A is present in rhodopsin. It's a retinol containing pigment and it's making retina. Human eyeball consists of 3 layers. It encloses. So eyeball में 3 लेयर्स जो होती हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? लेंस होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है. वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड. वैक्स ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है ईयर कैनाल में उसको क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, या सिबेशियस ग्लैंड, सिरोमिनस ग्लैंड कहते हैं. तो आपको पता होना चाहिए इट इज डी, सिरोमिनस और सिबेशियस ग्लैंड. पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज, कौन सा पार्ट इंटरनल ईयर का हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज कॉक्लिया. कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग. द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द. ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज प्रेजेंट इन कॉक्लिया ओनली. आंसर इज कॉक्लिया. So with this, we have already completed chapter 21 MCQs as well. So chapter 21 and 22 both MCQs we have done in this video because both are related chapters. One is nervous coordination, another is chemical control coordination. So in the same way, we will be doing other chapters MCQs as well for your revision. Till then, bye. And if you like the video, then hit the like button and share and subscribe the channel. Thank you everyone for listening.